उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज तीनों की मैं निंदा करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को शायद गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं। Leader of the House, control your people. Control your people. Honorable members, one second. Honorable members, Leader of the House represents the House, he is leader of your party. Everyone heard him with as much attention as could be possible. That indulgence is entitled to every member of the House. Please maintain decorum. Leader of the opposition. सर, आपका मैं briefly on this point only, Kharge ji, limited to this only. मैं वही बोल रहा अभी बोला। Please, it's a request, sir. You are very senior man. Be kind to the chair. मैं अभी मुंह भी नहीं खोला। Kharge ji, if anyone has to be kind to the chair, it has to be Mr. Kharge before anyone else. सर, मैंने जो सुनो, please. Leader of the House, control your people. Control your people. What is this? This is not the way. We have to lend our ears to the leader of the opposition. His statement has been in public domain. Let him say, please. सर, एक तो मैं जो राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो जो सभा वहाँ पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूँ, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, और ये माफी मांगने वाले लोग, ये माफी मांगने वाले Settle down, everyone. Settle down. Honorable members, we are setting very bad example. And I can tell you, people outside are disillusioned. This kind of display of conduct and behavior
gives us a very, very bad name. And this side and this side both must have... One second. I can understand. Even the observations of the chair that are wholesome are indigestible. What a painful scenario we are having. Trust me, 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है कि क्या प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कह दी गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिट फॉर टैट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। सो I would take very strong view of every member, and in last few working days, honorable members, I have seen two things. Very senior members, in spite of my direction, have failed to put the document on record. I give every member who was directed by me during the course of his speech, referring to a document or a video, a last opportunity is given during course of the day to make available the document on the table of the House. Any such failure will visit the member, and I can tell you with exemplary consequences. In performing my constitutional duties, I will neither look at this side nor at this side. I will look only to the Constitution. And I would therefore please hear leader of the opposition. He has already made one point that anything made by him by way of a statement outside the House should not be discussed here. This is one point he has made. Please, 1 second. थैंक यू सर। Please. मैंने बाहर जो कहा अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा सच नहीं है। क्या किए गांधी? तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा। और ये बार बार बोलते हैं ये अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहते। सर मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को शायद इतिहास बहुत ज्यादा याद नहीं है। उनको ये याद नहीं है कैसे कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर का क्या हालत हुई। उनको ये याद नहीं है कैसे आज भी भारत की करके रखी है। उनको ये याद नहीं है उन्हीं के समय चाइना ने 38,000 किलोमीटर भारत की जमीन हड़प ली थी।
ये भूल रहे हैं कैसे इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। ये भूल रहे हैं इन्होंने किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका कि वो कुछ कश्मीर में कर सके। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूल रहे हैं। मुझे लगता है इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और इनको कोई अधिकार नहीं है ऐसे बेबुनियाद Honorable members, I have received 6 notices. Honorable members, I have received. Honorable members, in spite of my ruling, we continue to use a rarest of rare mechanism very frequently. Even today, I have 6 notices under Rule 267. In one of the notices, Professor Ram Gopal Yadav has done homework. It is good for the professor, but the professor has to get some guidance from the student. Professor has made reference diligently, but in the process has committed 2 big errors. One, the professor was in hot haste and therefore submitted his notice before Rajya Sabha rose for the day yesterday. His notice was received at 4:46 p.m. on 19 December and that session was in progress. Number 2, the best way to learn a subject, professor, is to teach it. So I will be teaching Rule 267 now, in the process learning it. Professor has indicated very fairly, and I'm grateful to him, that one of the distinguished members has followed the rule proviso and has indicated, यद्यपि सदन की नियमावली में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने जाने के संबंध में नियम 176 व 180 उपलब्ध है, क्योंकि 267 cannot be raised if you can raise an issue in any other rule. पर आगे प्रोफेसर साहब ने क्या कहा है, इन नियमों के तहत संबंधित मंत्री की सहमति आवश्यकता है. प्रोफेसर साहब, मंत्री की सहमति आवश्यकता नहीं है. This house will not transact any business with the permission of any member or a minister. परमिशन मेरी है. आपको सजेस्ट किया जाता है और ये आदत मेरी बदलनी पड़ रही है. अब तक जितनी राय दी है प्रोफेसर साहब, that has always been followed by a memo, a fee memo. ये राय बिना fee memo के है. Follow the rules, it will be raised. Other than this, none of the notices merit attention because they are in outrageous disregard of the requirements of the rules. Proviso to Rule 67 is required to be exhausted. Honorable members. Mr. Derek O'Brien, please take your seat. Thank you, sir. Okay. I'm actually very grateful to you for bringing this 267 rule into focus. It's important, and you have shared your thoughts today as well as yesterday, sir. I'm only on the rules, sir. The rule 266 and 267. That's what Yes, sir, 266 and 267. Sir, I am referring today, sir, to 2 points. Please hear me out, sir. Let's begin with page 95 of the Rajya Sabha at work. I'll quickly read the relevant point. The Rajya Sabha at work, page 95. The chairman's rulings constitute precedents which are of binding nature. The chairman's rulings cannot be questioned or criticized, and to protest against the ruling of the chairman is contempt of the House and the chairman. I refer to page 95, sir.
they constitute precedents. Sir, my second reference, may I take you to page 320? Derek? Yes, sir, one second. Honorable member, they constitute binding precedent Yes, sir. to be complied in all situations, because when your attention was drawn by the Honorable Deputy Chairperson that on last occasion you continued making a point in spite of my ruling. Sir, So fair it's enough. a binding precedent. Sir, binding precedent, Please, go sir. ahead, I'm go on ahead. the point of binding precedent. Yes. Thank you, sir. I'm on the point of binding precedent. Page 320 of Rajya Sabha at work. I'm quoting from page 320 and I quote, rulings are given by the chair according to precedents of the House, and where there is no precedent, the usual parliamentary practice is followed. That's on rule page 320. A similar page 131, also in this Rajya Sabha at work, is to do with precedents. So now that we've got the precedents out of the way, I want to get to the precedents of Rule 267. Yesterday, the Honorable Chairman quite correctly said that your predecessor. आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।